Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just wait for 1 minute. Can you see the screen? Hello. Yes, sir. I think this was the last time's discussion. Correct, no? We had started with the new chapter, that is kinetics of particles 1. In that we um, covered the basic aspects like basic concepts. What are the Newton's second law of motions, and what are the limitations. Then, after discussing limitations, we just discuss the use of D'Alembert's principle, okay, and why it is required. Okay, so in that we found कि pseudo force का concept क्यों जरूरी है, okay, and from where it started, okay, why it is actually uh, coming into picture, okay, while analyzing the problems based on the kinetics, correct? So all that we covered. had a discussion on different types of motion. That means kinetics के अंदर जो भी problems आएंगे, see, you can see when the problems will be given to you. First step is that you will first observe the problem carefully and try to make some or try to figure out the what motions between the bodies. Okay, the motions can be like dependent and it can be also independent. Okay, तो अगर dependent type का motion है तो you will first try to develop the relations between their position coordinates, or in other words we can say we will try to develop the relations between the motion parameters of those bodies. Okay, if that is independent bodies, or if the bodies are performing independent motion, then there is no need to develop the relation between the motion parameters. Okay, so we'll see this here, okay, how it is required. तो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि पहला जो मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिया था. So in this you can see there is one pulley, okay, which is fixed, and there is one more pulley which is movable pulley. Okay, so to this pulley there is one block which is attached, okay, or suspended with this string, and the same string is wound over this movable pulley. Okay, and the other end of this string is connected to the fixed reference, that is the fixed wall. Okay, and you can see here to the to the fixed pulley there is a string. Okay, जिसके लोअर मोस्ट पोर्शन पे 50 kg का वेट जो है सस्पेंड किया है,
and to the second pulley which is a movable pulley, उसके सेंटर पे 150 kg का वेट अटैच किया है, राइट ना? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो this 150 kg of mass, okay, this block is having mass 150 kg, so due to gravity it will try to move in the down directions, correct? As at the same time when it will move in the downward directions, the 50 kg block will go in the upward directions, okay? So there will be a tension induced in the strings, okay, and that tensions we need to find out. Now here we are assuming that pulley is weightless, okay, and frictionless, okay. So when the pulley is weightless and frictionless, our analysis become easier, okay. So most of the time you will be given in the problems, it is weightless and frictionless. If it is not given, you can assume it, okay. Now I already told you how to mark the tensions and all, okay. तो यहाँ पे देखो ये tensions मैंने mark out किया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंस दिस ब्लॉक्स आर कनेक्टेड विद द सेम स्ट्रिंग्स, ओके, दोनों भी पुलिस पे सेम स्ट्रिंग्स पास हो रहा है, तो यहाँ पे देखो सब सारा इसमें जो है टेंशंस क्या रहेगा, सारे स्ट्रिंग्स में सेम रहेगा। तो इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शंस में क्या रहेगा, टी, then this portion will also have t and this portion will also have t, but the this part which is there, ओके, जो आपका ब्लॉक 150 केजी से कनेक्टेड है और मूवेबल पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, इसके अंदर कितना टेंशन इंड्यूस होगा, दिस टी प्लस टी, दैट विल बी 2t, करेक्ट? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो you can see the tension which is acting on the 50 kg block and tension which is acting on the 150 kg block are different, okay. So will the acceleration of these two blocks will remain same? Hello, that we need to think. अगर सपोज कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता था, यहाँ पे एक पुली होता था, ये फिक्स किया होता था मैंने यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक ब्लॉक होता था, ठीक है, इसका अदर एंड एक यहाँ से एक ब्लॉक होता था, ठीक है। तो आई कैन से कि अगर मैंने इसको नीचे मूव किया, ये ऊपर जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सपोज इसके अंदर टेंशन टी है तो इसके अंदर भी टेंशन टी रहेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, दोनों भी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है सेम हो जाएगा, ठीक है ना? एम आई करेक्ट? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेंशन है ये अलग है और यहाँ पे ये जो टेंशन है ये अलग है, जिसके कारण ये जो एक्सेलरेशन है सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वी नीड टू व्हाट फिगर आउट, करेक्ट ना? आर यू गेटिंग मी? हेलो, Yes, sir. हेलो। Yes. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू कि क्या है उसका एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशंस दोनों के बीच में, वी आर गोइंग टू यूज, वी कैन आइदर यूज मेथड वन, दैट इज वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल मेथड, और आइदर वी कैन यूज सेकंड मेथड, दैट इज कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड। तो मेथड वन क्या है कि work done, the algebraic sum of the work done by the internal forces is to be taken as zero. Now here the tension which is induced in the strings is considered as an internal force. तो इसका मतलब अगर हमने इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर टेंशन है T, अगर हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया सपोज एक्स ए, लेट्स से दिस इज ब्लॉक ए, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने एक्स ए, ठीक है। तो it can do, okay, depending on the directions of this displacement and force, it can either perform a positive or negative work, ठीक है। तो जो भी वर्क डन परफॉर्म बाय दिस ब्लॉक होगा वो, और सिमिलरली इस ब्लॉक के बाय द दिस ब्लॉक बी, whatever the work done by this block, I can add up and equate it to zero, that will my total work done by the internal forces, और वहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे रिलेशंस निकल के आएगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन से the product of the tension force and the displacement always remains constant. This is nothing but virtual work principle ना, can I say this? यहाँ पे देखो ना, work done by the internal forces summation of all this is zero, that means summation of tx is constant, correct ना? इसका मतलब अगर मैं ऐसा करूँ, tx इसका डिस्प्लेसमेंट अज्यूम किया है a, और इसका यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, देखो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक वन के लिए मैं लिखता हूँ वन, और ब्लॉक टू के लिए लिखता हूँ, या ऐसे देखो टी ए, and this block B, that is TB into XB, correct? Now here TA is T, this is X A, okay? Now we know that TB is what? The tension in the block B, and I know that that is 2T, that is XB, okay? This will cancel out. That means XA is equal to 2XB, right? Now if you differentiate this twice, you will get acceleration
A is equal to 2 times acceleration of B. That means if block A is moving with an acceleration A, okay, so at the same time this block will move with the acceleration 2A. Are you getting me? Hello. So this job you have to do first. यहाँ पे क्या करना है, पहले एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? पहला स्टेप होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई करना. ओके, डायरेक्शन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई करना. सेकेंड स्टेप होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स का रिलेशन फाइंड आउट करना. ठीक है. थर्ड होगा मोशन एनालिसिस. एक बार ये क्लियर हो गया, फिर आप क्या करोगे, मोशन एनालिसिस करोगे फ्री बॉडी डायग्राम बना के. फॉर दैट यू कैन यूज आइदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल. इज इट क्लियर टू यू? This is the step to solve the problems based on dependent motion. Are you getting me? Hello? Hello? यहाँ तक क्लियर है? ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे आया था ना. अभी यही चीज आप क्या कर सकते हो, सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो, कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड से. ठीक है, अभी कैसे कांस्टेंट स्ट्रिंग लेंथ मेथड से कर सकते हैं देखो. ठीक है, वही आएगा निकल के. ठीक है, रिलेशंस वही आने वाला है निकल के. लेट अस सी दिस. लेट मी कॉपी दिस हियर. Can you see this? Hello? Or just wait. Yes. Just wait a moment. Okay. Yeah. Can you see this? Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. So see here, now second method, according to second method, what it says, that is a constant string length method. According to constant string length method, it says that the total length of the string remains constant. Okay, total length of the string remains constant. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, in this second method, if you are using, you first select a datum. Okay, select a datum. That datum is selected in such a manner that it is perpendicular to the direction of motion. Now see here, the blocks are performing the motion in vertical directions. So I have taken this as a datum, as horizontal line. This is representing datum. Now from the datum, you will measure the length of each of the portions of the string which is undergoing a change. सिर्फ वही पार्ट कंसिडर करोगे जो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है वो नहीं कंसिडर करो. अभी यहाँ पे देखो, दिस पार्ट इज नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, so this will not be considered. Since this is undergoing under change, this is undergoing change, this is undergoing change with respect to time, so these all can be considered. So here if I measure the this portion as xa, so let me call this as xa. Similarly I can call this portion as xb. Okay, now I can write here an expression for the total length of the string, which can be what? See, as this block B will go downward, at the same time this block A will move in the up direction. So I can write this XA portion will be covered here, okay? Then plus block B, when this block B will come down,
this xb and this xb portion will be covered at the same time. Okay, so this xb and this xb will become 2xb, and this will be plus xa. Correct? Are you getting me? Now, next step, you will differentiate this expression with respect to time. So this will become dl over dt is equal to twice dxp over dt plus dxa over dt. Correct? Now, since the length of this string remains constant, that's why this will be 0. Correct? And now this representing a slope of this quantity. Now you can see here when the block is moving in the up direction, this portion of the string will what reduce. Correct? So that means xa will goes on decreasing. Since xa is goes on decreasing, that means slope of this slope will goes on decreasing. Okay, so that means it represents a what it represents a negative slope. So that's why here you can see, sorry, this is dxa. This dxa over dt represents a negative times of va. Actually, this dxa by dt is what velocity, na? Slope of this displacement. And why this is minus? Because this is decreasing. At the same time, this xp will what goes on increasing when the block will go downward. So this represents the positive slope. That means it is positive vb. So see here, we got va is equal to twice vb. Since the velocity of block a is twice of velocity of block b, that's why acceleration of block a will be twice of acceleration of block b. We got the same relations, correct? Which we got using a this virtual work principle method. Correct ना? तो ये दोनों मेथड भी आप यूज कर सकते हो सिर्फ एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है? इट्स अप टू यू, बट आई विल रिकमेंड फर्स्ट मेथड इज universal method. You can apply anywhere. That is virtual work method. Okay, so we will preferably use that method. Okay, now once you found the relations, next step, that will be final step, is the motion analysis. तो motion analysis में क्या करोगे? You will draw the free body diagram for this. Let us isolate this block A here. So you can see here I have isolated this block A here, and I have shown all the forces, external forces which are acting on this block. So first force which will be there, that will be weight of this block, that is 50. That 50 is mass into g. G I have assumed 10. Okay, for easier calculations. See, unless otherwise stated, you can't assume g as 10. Okay, unless otherwise it stated, you will take 9.81. Since here I have mentioned that assume g as 10, that's why I'm taking 10. Okay, so please note. So here it is 50 times 10. Okay, that will be 500. Okay, then what I will do, I will apply either Newton's second law of motions or what, D'Alembert's principle. So according to Newton's second law of motions, I know that summation fx is equal to m times ax. Okay, summation fx represents what? The algebraic sum of all the external forces acting on the body. So here I can see this block is moving in the up direction. That means acceleration is in the up directions. Okay, so it is performing a motion in the upward directions. तो बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटीज है वो पॉजिटिव लेना है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्वांटिटीज निगेटिव लेना है. So you can see tension is what, in the direction of motion. So that's why it is T. 500 Newton force is acting in the opposite direction to the motion, that is minus 500, and equal to right hand side, that is mass 50 into acceleration of block A, that is what, AA. Okay, but we know that this acceleration is what, twice of the acceleration of B. Either you can write here AA simply. Okay, that is also okay. Finally, because you know that AA is what, 2 times of AB. You can use these relations. Okay, or indirectly you can assume the block का acceleration as A. तो अगर इसका A हो गया, तो this will be 2A. Okay, either the way you can write. Okay, I hope you are getting me correct now. Hello, hello, hello. Yes. Am I clear up to this point? Is there any doubt? Hello. No, sir. Okay. Now see, the same relation you can write using D'Alembert's principle. अगर D'Alembert's principle से लिखना है तो क्या करोगे? This is your block A. ठीक है? Forces तो वही लगने वाले हैं T, और यहाँ पे 500 न्यूटन. ठीक है? ठीक है? And body is performing motion in up directions. ठीक है? ये वाला directions. तो आप पहले direction of motion यहाँ पे दिखा दो. ठीक है? Now you know that according to D'Alembert's principle, we have to add an pseudo force. Correct ना?
in the opposite direction of the motion. So I will take a pseudo force, that is m times acceleration of the block, and I will directly write an expression, that is summation what block is performing the motion in y directions. Okay, so this should be summation fy. This should not be mx. This correct it. Okay, this should be may. Okay, because motion is in y direction. Huh? So this will be summation fy and plus some what this pseudo force, that is this is equal to 0. So summation fy will be this, that is t minus 500. Correct na? T minus 500. और pseudo force क्या हो जाएगा? Mass time acceleration, but that is in the opposite directions. So plus and minus will become minus na? So this is minus what? 50 times acceleration of block A, that is 2A. Okay, right? And it is to be equated with 0. So you see here the same equation you are getting, correct na? So just it is a modification of Newton's second law of motions, nothing else. अगर ये क्वांटिटी जो राइट साइड का है उसको लेफ्ट में लोगे तो वही डीअलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल बन जाता है. समझ में आया ना? सिंपल, अगर सिंपली बोलूं तो ठीक है. So similarly, you can write an equations for block B, okay, using the Newton's second law of motion or D'Alembert's principle. तो यहाँ पे 1500 का weight आ गया, माइनस इसका टेंशन कितना है 2t. ओके, ब्लॉक बी जो है नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव दिया है और ये नेगेटिव दिया है 2t, एंड इज इक्वल टू 150 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. फिर ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, you will get the value of tension, that is 642.85 Newton, and acceleration as 1.43 meter per second square. You can check it, okay, later. Did you understand the methodology? Hello. So this was the basic problem to just illustrate you about the how to perform the analysis of dependent motions. Correct ना? समझ में आया ना आपको? Hello. कुछ डाउट है? तो पहले जब आप The first slide that of question where you use that 2t wala like. एक मिनट, यही ना, यही ना. हाँ yes sir. देखो ना, ये यहाँ पे टेंशन टी आएगा, ठीक है. ये जब नीचे जाएगा तो इसमें भी टेंशन टी आएगा, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है ना जो जा रहा है सबके ऊपर से. ये भी टी आएगा. तो अगर ये टी और ये टी है तो ये वाले पोर्शन पे कितना टी आएगा? 2t आ जाएगा ना, नेट Yes, टेंशन, sir. टोटल टेंशन. Yeah, I was हाँ तो seeing the sign sir, मतलब वो -2t कैसे वो वही देख रहा था sir. अच्छा, -2t कैसे हुआ? देखो, ये ब्लॉक मैंने अज्यूम किया है कि नीचे जा रहा है ना, तो ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉडी का किस में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. बट ये जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. तो मैंने क्या बोला, क्वांटिटीज जो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो निगेटिव देना है. तो ये ऊपर और ये नीचे, इसलिए ये निगेटिव रखा है. समझ में आया? या सर समझा. है तो पॉजिटिव, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव. सिंपल. ओके, समझा सर. then only you will get the net force ना, otherwise you will not get net force. समझ में आया ना? ओके. So now let's see, let's take one more example and try to tell me the relations. Okay. अभी देखो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये भी डिपेंडेंट मोशन का ही प्रॉब्लम है. देखो, ठीक है, इसके अंदर देखो ब्लॉक ए है, जो पुली, एक पुली है यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, फिर यहाँ से ये पास हो रहा है, उससे दूसरा पुली अटैच किया हुआ है. दिस इज मूवेबल पुली. ओके, यू कैन सी हियर. उससे ब्लॉक भी अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे फिर वही स्ट्रिंग से अगला एक पुली वाउंड किया है, ठीक है, जो फिक्स किया हुआ है, और फिर वहीं से अगले स्ट्रिंग्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है ब्लॉक सी, और तीनों ब्लॉक्स का वेट दिया हुआ है. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? नाउ यू हैव टू फ्रेम, यू हैव टू चेक फर्स्ट कि क्या उन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं, क्योंकि ये भी फिर से क्या हो गया, डिपेंडेंट मोशन का प्रॉब्लम हो गया ना. अगर एक भी बॉडी का मोशन हमने चेंज किया यहाँ वहां तो बाकी बॉडीज इफेक्ट होगा ना, कनेक्टेड हो गया ना बॉडीज. तो पहले प्रॉब्लम में आपको देखना है, काइनेटिक्स का प्रॉब्लम जब आता है तो वो जस्ट आप देख के ही पता लगा सकते हो कि अगर एक बॉडी परफॉर्म कर रहा है मोशन तो दूसरे वाले को इफेक्ट हो रहा है या नहीं. सो दैट सिंपल. अगर इफेक्ट हो रहा है तो दैट इज डिपेंडेंट, अगर नहीं हो रहा है तो इनडिपेंडेंट. ओके, मींस मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. आर यू गेटिंग ना? तो हियर यू कैन सी. अब आप मुझे बताओ कौन सा ब्लॉक का डायरेक्शंस क्या होगा. See, of course, you can assume any directions, okay, as per your convenience. Later, what you will get the answers in negative. So that negative sign will indicate that your assumptions was incorrect.
तो यू कैन चेंज द साइन, ओके। बट ऑफ कोर्स अगर आपको प्रेडिक्टेबल है कि आप डायरेक्शंस निकाल सकते हो तो वही डायरेक्शंस लेके करो। अभी यहाँ पे बोलो ब्लॉक ए का और बी का सी का डायरेक्शंस क्या होगा, कैन यू प्रिडिक्ट? हेलो हेलो सर ए एंड सी का अपवर्ड्स होना चाहिए, बी का नेगेटिव। हाँ देखो, क्योंकि इसमें क्या है, इसका ब्लॉक का ए का वेट दिया है 150 ना, ये 150 न्यूटन का दिया है, मतलब इसके अंदर आ गया टेंशन कितना, 150, राइट ना? सॉरी, इसका ब्लॉक का बी का कितना दिया है, 450। तो 450 की वजह से ये टेंशन डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका 225 आ गया न्यूटन्स का टेंशन। अगर ये 225 का है तो यहाँ भी 225 का है, राइट ना? आर यू गेटिंग मी? हेलो। यस सर। हाँ, नाउ यू कैन सी हियर, ये इसका वेट है 150, ओके। वेट है 150, दिस वेट इज लेस देन दिस टेंशन फोर्स, तो दैट्स व्हाई ये जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये इसको ऊपर खींचेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी 225 न्यूटन है, इसमें इसमें भी 225 का ही न्यूटन का स्प्रिंग में टेंशन है। और ये ब्लॉक सी का वेट कितना है, 300। तो ये वाला टेंशन का वैल्यू कम है इसके वेट से, दैट मीन्स ये सी क्या है, इसको नीचे खींचेगा, तो सी का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गया, मतलब ए का और सी का तो डायरेक्ट मिल गया। अब बचा बी का हम एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना, क्योंकि बी जो है इंटरमीडिएट है, देखो ये इससे भी कनेक्टेड है, ये भी इससे भी कनेक्टेड है, तो बी का हमको अज्यूम करना पड़ेगा समथिंग, ओके। तो लेट अस अज्यूम दैट बी इज मूविंग इन अप डायरेक्शन, और अप डायरेक्शन में लेके सॉल्व करो। अगर आपका अजम्पशंस गलत होगा तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, मींस एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आया दैट मीन्स वो आपका अजम्पशन जो था इनकरेक्ट था, आप उसको चेंज कर सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आया? आर यू गेटिंग मी? हेलो 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 हेलो। Yes. मैं audible? हाँ, now the important here is to find out the relations between their accelerations. क्या acceleration तीनों ब्लॉक का सेम होगा क्या? नो सर, अलग नहीं होगा। ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर से आप प्रिंसिपल अप्लाई करो, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल। देखो क्या होगा, इसका मैंने अज्यूम किया टेंशन इसमें कितना है, टी, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, टी टाइम्स एक्स ए, बिकॉज दिस इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड टेंशन इन द सेम डायरेक्शन, तो दिस विल बी पॉजिटिव वर्क। देन अगेन इसके ऊपर टेंशन कितना है, 2t, एंड इट इज गोइंग अप, तो अगेन इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, 2t टाइम्स xp, and since the block is moving in the downward direction, c is moving in the downward direction and tension is in the opposite direction, so this is doing negative work, because उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। and you know that work done is equal to f dot s, ना, this is fs cos theta, तो अगर थीटा 180 हुआ तो ये निगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है। हेलो, तो दिस विल बी माइनस टी एक्स सी, and if you simplify you will get the acceleration of a plus twice of acceleration of b is equal to acceleration of c. You can use this relation. Again you can draw the free body diagram of the block a and b and c and use the same Newton's second law of motion, or DAP, that is D'Alembert's principle, and find out the acceleration. So you will get this answer. Just note down this answer and try to get it, okay. This will be your homework, okay. समझ में आया? Hello, do you want to ask anything? Hello, hello, हेलो। No. ओके, तो अभी डाउट नहीं है ना, तो अभी एक काम करो, अभी आपका क्वेश्चन बैंक ओपन करो। क्वेश्चन बैंक के अंदर, जस्ट अ मिनट, इन क्वेश्चन बैंक ओपन द चैप्टर 5, दैट इज, एक सेकेंड, हाँ, चैप्टर नंबर दिस 5.1, यूनिट 5.1, ओके।
Problem number 5.1.2. Problem number 5.1.2. दिख रहा है? Hello. Hello. Yes, sir. Let us try to solve this. तो चलो solve करेंगे अभी इसको. Solve कर सकते हो क्या? Let me just draw the diagram. ये एक पुली है, ठीक है? यहाँ पे string है, okay? And then here there is another part. फिर यहाँ पे एक पुली है. एक सेकेंड, ऐसा नहीं है. You try to solve it. Okay? I'm doing with you. ऐसे ही है ना प्रॉब्लम? हेलो. Yes, sir. I see. Now see here. This is block A and this is block B. Okay? ये 10 kg है. Mass of A is 10 kg and mass of B is 4 kg, I think. Right now? And we have to find the tension in the cord and the acceleration of this block A and B. तो चलो पहला स्टेप क्या होगा? Tell me. What will be the first step? Mark the tensions. No, first step will be the direction of motion. Don't forget. First step. पहला step, direction of motion. Direction of motion of the blocks. चलो बताओ क्या आएगा डायरेक्शंस? सीधी सी बात है ना. यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है. ये कितना है? 10 kg है. ग्रेविटी की वजह से ये नीचे जाएगा. ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा. ठीक, बराबर है. ये करेक्ट है. हेलो. हेलो. Yes, sir. सेकेंड स्टेप, relationship between acceleration of blocks. So for that we will use the virtual method principle. So for that we need tensions पहले mark करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो, let us suppose this is TA. Okay, block A के अंदर TA है
ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है ना, बराबर है ना। तो इसमें TA है तो ये भी TA रहने वाला है, बराबर है ना। आर यू गेटिंग मी? यस सर। सर और ये लेट अस अज्यूम दैट दिस इज TB, करेक्ट, दिस इज व्हाट TB। तो ये भी क्या रहने वाला है, TB रहने वाला है, बराबर। सर वो ये हाफ हो दूसरा जाएगा स्ट्रिंग आ गया यहाँ यस से, सर। ये दूसरा स्ट्रिंग आ गया। बट यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये TB और ये TB मिलके क्या होता है, दिस इज ऑल्सो टी ए। टी है। तो हाँ, टी ए दैट इज इक्वल टू 2 TB। 14. कैन यू टेल, हाँ, कैन यू से दिस TA इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ TB। तो यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, देखो TA इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ TB, तो नो नीड टू कैलकुलेट ऑल्सो। ओके, तो अगर ये TA इज इक्वल टू 2TB है तो सीधी सी बात है ना, अगर आप वर्चुअल प्रिंसिपल लगाते हो तो क्या हो जाएगा, देखो वर्चुअल प्रिंसिपल क्या है, TA XA इज इक्वल टू TB XB, करेक्ट, राइट ना। एंड दिस विल X इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ दिस ब्लॉक। आर यू गेटिंग मी? This is acceleration of block A, let us, and this is acceleration of block B. So this will be TA. Hello, I can write this as 2TB, correct na? Hello, यस सर। this is XA and this will be TB, this will be XB. तो ये TB TB कैंसिल हो जाएगा, 2XA is equal to XB। अगर ये सही है तो इसका मतलब, डिफरेंशिएशन करके हम लोग को एक्सीलरेशन मिल जाएगा। या, तो that will be this velocity twice है इसका, and that means twice of acceleration of block A is equal to acceleration of block B। मतलब अगर ब्लॉक A जो है acceleration A के साथ चल रहा है तो ब्लॉक B 2A के साथ चल रहा है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अभी अपना, बोलो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। एफबीडी बना के वो मोशन सॉल्व करेंगे। क्या, मोशन एनालिसिस। तो मोशन एनालिसिस थर्ड स्टेप। तो FBD बना दो यहाँ पे, हाँ FBD ऑफ, आपको एग्जाम में लिखना है, हाँ ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखो चाहिए तो, FBD ऑफ ब्लॉक A, ओके। तो पहला क्या आ जाएगा, इसका वेट, दैट इज 10 एफबीडी इंटू ब्लॉक में 10 इंटू 9.81 ना, ठीक है ना। दैट इज आई थिंक 98.1 न्यूटन, करेक्ट। एंड दिस विल बी द टेंशन, दैट इज TA, ठीक है ना। हेलो, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A, ठीक है, करेक्ट है। नाउ यूजिंग this FBD and Newton's second law of motion, I can write summation Fy is equal to MAy, करेक्ट। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, -TA, ठीक है, प्लस 98.1, राइट है ना, इज इक्वल टू 10 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर टू यू? हेलो, हेलो। यस सर। सर प्रीफरेबल कौन सा होगा, मतलब ये डी एलेम्बर्ट्स या न्यूटन्स? नहीं, जब तक प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है, आप अपने से आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम में अगर स्पेसिफिकली बोला है यूज डीएलएम्बर्ट्स, तो डीएलएम्बर्ट्स ही यूज करना पड़ेगा। अगर न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके किया तो 0 मार्क्स मिलेगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम में मेंशन नहीं है तो इट्स योर चॉइस, ओके। तो मेथड भी पूछते हैं उन लोग, हाँ, हेलो, सॉरी। मतलब मेथड भी आएगा क्वेश्चन में कि कौन से हाँ, करना है। मेथड, हाँ ऐसा आ सकता है ना, बिकॉज आपको दोनों मेथड पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी उसमें कुछ नहीं करना है, डीएलएम्बर्ट्स में क्या करना है, ये राइट हैंड साइड सिर्फ यहाँ पे आएगा और ये डायग्राम में आपको दिखाना पड़ेगा। खाली क्या दिखाना पड़ेगा, वो स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स आप कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे ना, राइट है ना, समझ में आया ना। यस सर।
तो ये इतना एडिशन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। अगर डीएलएम्बर्ट्स यूज कर रहे हो तो ऊपर हेडिंग डालना पड़ेगा डीएलएम्बर्ट्स, और ये सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा जो मैंने पिंक में बनाया है। अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ से कर रहे हो तो ये दिखाने का जरूरत नहीं है। नाउ FBD ऑफ ब्लॉक बी, तो FBD ऑफ ब्लॉक बी विल बी, इसका आएगा वेट, दैट इज कितना हो गया, 4 into 9.81. This will be, I think, 4 1 ja 4, 4 8 ja 32, 4 9 ja 39.24. Correct, no? Newton. And the tension is TB. ठीक है? And the direction of motion is upward. ठीक है? Then again, using the FBD of block B and Newton's second law of motion, I can write summation Fy is equal to MAy. So this will be T minus 39.24 is equal to, this will be 4 times AB, correct? This is my equation number 3. Now solve the equation 1, 2, 3 and tell me the answer. After solving equation 1, 2 and 3, what we are going to get? Tell me, 3 unknowns, 3 equations. Can you solve? Multiply the equation number 2 by 2 and then equate it with equation number 3. You will get the answer. Okay, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आया ना, और इसके साथ इक्वेट करो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो 2 के साथ एंड इक्वेटेड विथ इक्वेशन 3. इज इट करेक्ट एज पर इक्वेशन नंबर 1? Am I clear? So you will get here मैं आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, आप नोट डाउन करो, जिसका आया है अच्छी बात है, नहीं तो वो ट्राई करो, ठीक है, बाद में निकाल देंगे। पीबी का वैल्यू आएगा 45.277 न्यूटन, टीए का वैल्यू आएगा 90.554 न्यूटन, okay, and acceleration of block A is 0.7546 meter per second square and acceleration of block B is 1.508 meter per second square. ठीक है, आ रहा है क्या? This is the answer. पर सारे क्वेश्चन में जी 9.81 ही लेना है। हाँ 9.81 ही लेना है, कुछ प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं है ना, तो 9.81 ही लेना है। This is your answer. अगर 10 लेना होगा तो वो लिख के देगा क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं देना, नहीं दिया है तो आपको 9.81 ही देना। ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट वन। ये हो गया, नोट डाउन किया आंसर। यस सर। नाउ टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 5.1.3, again first you identify whether it is dependent motion का problem or independent motion का problem। 5.1.3, tell me, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? बोलो। पर सेम एक्सेलरेशन होगा। इंडिपेंडेंट। नहीं हो जाने दो, पहले ये प्रॉब्लम बताओ क्या है, तो एक्सीलरेशन के बाद में आता है बात। यस, इंडिपेंडेंट सर। इंडिपेंडेंट है।
बोलो। सर डिपेंडेंट है तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स है ना। इंडिपेंडेंट किसने बोला? हाँ सर, कैन रॉन्ग बोला। हाउ इट इज इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट नहीं, ये देखो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये इसके साथ फिर यहाँ कनेक्टेड है पूंजी के साथ, ठीक है। तो अगर ब्लॉक सी नीचे खींचोगे तो सारे ब्लॉक्स डिस्टर्ब होंगे, ठीक है, हर एक ब्लॉक एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इट इज अ डिपेंडेंट का केस। स्टार्ट सॉल्विंग, आई एम ड्राइंग द डायग्राम हियर। This is block A, block B, block C. Mass of block A is 5 kg. Mass of block B is 10 kg. Mass of block C is 20 kg. Okay, and mu is given. Here mu is also given. Mu का value, coefficient of kinetic coefficient of friction, that is given between A and this surface, that is 0.2, and for this it is given 0.25 Newton. Correct? Hello? Hello? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप, यस, फर्स्ट स्टेप, मोशन एनालिसिस। first step will be direction of motion, na? Direction of motion of blocks. Direction of motion of blocks. So here, as you can see, block C is having a higher weight, 20 kg. So due to gravity effect, it will go downward. Okay. तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये दोनों भी राइट की तरफ जाएंगे। करेक्ट है ना? यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा अभी? स्टेप नंबर 2। वो टेंशंस देखने का सर। हाँ, स्टेप नंबर 2 will be the acceleration relations in the, sorry, उल्टा लिख दिया, relations between the acceleration of blocks. ठीक, तो टेंशंस मार्क करना पड़ेगा। तो अभी बोलो क्या होगा? अभी देखो, ये ब्लॉक बी और सी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ब्लॉक ए एंड बी इज कनेक्टेड विद सम अदर स्ट्रिंग्स। ओके, लेट अस अज्यूम दैट ये T1 हो गया अगर, ठीक है, इसके अंदर T1 है, तो इसके अंदर मैं अज्यूम करता हूँ क्या, T2। तो ये दोनों का सेम रहेगा और ये दोनों का सेम रहेगा, ठीक है ना? राइट, बी और सी के लिए टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा, राइट, और ए और बी के लिए टेंशन का वैल्यू सेम रहेगा। करेक्ट है ना? हेलो? यस सर। Yes. As here you can see, as block A and B are connected with
same strings, correct? Same chord or strings. So अगर ये दोनों same string से connected है, can I say the acceleration of this block A will be equal to acceleration of block B? Is it correct? Yes, sir. And similarly, I can say the block C and block B and C is also connected with the same string. है ना? Block B and C are also connected with same string having tension T1 and having tension T2. So can I say this block B is having acceleration equal to block C? ये समझ में आया आपको? And therefore I can say acceleration of all the blocks will remain same. Right now? That is say A. Am I correct? This point is clear to you? सर वो न्यू का वैल्यू न्यूटन में कैसे? हाँ सॉरी वो न्यूटन नहीं है, वो गलती से लिखा है, वो यूनिट से रहता है. ठीक है, यस ये समझ में आया ना कैसे हुआ? यस सर. तो अभी ये एक्सेलरेशन आ गया. रिलेशंस यहाँ पे आपको अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है. बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन से द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स विल बी सेम. तो यानी कि आपको एक ही वैल्यू निकालना है एक्सेलरेशन का, दैट इज ए का वैल्यू. और टेंशन से कितने वैल्यू निकालने हैं? दो, T1 एंड T2. मतलब आपके पास टोटल 3 अननोन्स है. 3 अननोन है तो आपके पास 3 इक्वेशन होना चाहिए. ठीक है, तो आपके पास 3 ब्लॉक दिया हुआ है, तीनों का मोशन एनालिसिस करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आता है. So for motion analysis, you will draw the FBD first. This is block A. Okay. For block A, what are the forces acting on it? First, the weight, that will be 5 into 9.81. FBD of block A. ठीक है. And then tension. Tension आएगा इसमें T1. ठीक है. और क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स. Additional force. फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा क्योंकि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है. तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आएगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, करेक्ट ना? लेफ्ट में. ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. दैट विल बी म्यू टाइम्स, दैट इज 0.2 इज गिवन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, बराबर ना? तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आपको दिखाना पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन इज दिस n ना. This will be 0.2 times n. Let us assume this is n1. Okay, this is n1. I will assume the n1 for block A and surface and n2 for block B and surface. ठीक है ना? Hello. यस सर. Now you can write the Newton's second law of motion for this. So summation fx is equal to max, which will be nothing but t1 minus 0.2 n1. Okay, right? Which will be equal to mass time acceleration. कितना है? 5 into a. Or you can write simply a. ठीक है, because acceleration are same. Now n1 you can get, so you can apply second equation. Fy is equal to may. Okay, in y direction we have n1. Okay, then minus 5 into 9.81 is equal to 5 into acceleration in y direction. Since the block is not performing motion in y direction, so acceleration in y direction is 0, so this will be 0, and therefore n1 will be simply 5 into 9.81. ठीक है ना? Which is nothing but 49.05. Now you can substitute this n1 here and you will get the equation in terms of T1 and
A, correct? This will be T1 minus 0.2 into 49.05 करोगे तो आपको again मिल जाएगा 9.81 and it will be equal to 5 times A. So this will be your first equations. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? Hello. sir. Yes, sir. Yes. Yes. Now similarly you frame the second equation. For that you will isolate the block B. Draw the block B का FBD. यहाँ पे I will have my block B. I'll show the forces. First weight, फिर क्या आएगा? टेंशन आएगा यहाँ पे, that is T2 और यहाँ पे ये वाला भी आएगा, T1 भी आएगा, ठीक है ना? FBD of block B, ठीक है? Now here the normal reactions will be again here, that is N2, okay? And friction force कौन से डायरेक्शन में आएगा? Again it will be to the left, ना? Correct? 0.2 times, sorry, this is 0.25, no? 0.25 N2, correct? This is N2, this is T2, this is T1, this is 10 into 9.81. ठीक है ना? Hello? And motion is in this direction. So summation Fx is equal to Max, that will be minus T1, ठीक है? Plus T2, right? Minus 0.2 N2 is equal to, that is 10A, correct? And then summation Fy is equal to May. So this will be N2 minus 10 into 9.81 to 10 into 0. Okay, so that is N2 is equal to 10 into 9.81, that is 98.1 Newton. Substitute here, you will get in terms of given in this T2. Okay, so this will be T2 minus T1 is equal to final equations जो आएगा T1 minus T2, this 0.2 into N2 you will do now, so you will get 24 point something, 24.525, and this will be 10 times A. This will be your equation number 2. Check whether you are getting. Yes, sir. Get. आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, So ये T2 जो है minus T1 है ना? हाँ T2 minus T1. अभी जो है लास्ट वाला ब्लॉक बचा है, ठीक है, दैट इज ब्लॉक सी. तो ब्लॉक सी के लिए क्या करोगे? अगेन वेट आएगा, that is 20 into 9.81, motion in this direction, that is A, tension T2, okay? So simply this will be क्या हो जाएगा बोलो? T2, okay, that is minus T2 ना, and plus 20 into 9.81 is equal to 20A, ठीक है? So अगर ये देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज समथिंग 196.2 आता है, माइनस T2 is equal to 20A. ये सॉल्व करोगे आप तीनों इक्वेशंस. दिस इज थर्ड इक्वेशंस. Sir, acceleration 4.62 है. एक मिनट देखता हूँ.
एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है हाँ एक्सेलरेशन आता है 4.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड T1 32.93. T1 is 32.93 93. correct and T2 is 103.7. 103.6 meter correct huh? So this is your answer. Okay, this is the answer. सबको मिल गया? Yes. Okay, so now we will stop here. फिर इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे which is at 2:30. Okay, Hello, sir. and that will be the last lecture for this kinetics. Okay, kinetics part 1 हो जाएगा. From the next lecture, which will be offline, kinetics 2 and kinetics 3 will be starting. Okay. Yes. हेलो सर. हाँ बोलो ना, सुन रहा हूँ. आज सर वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल हम लोग सिर्फ पुली में ही लगाते ना, मतलब मेनली ये वाले सब में नहीं लगाया था मतलब. हाँ लगा सकते हो, लगाओगे तो भी सेम ही आएगा. ठीक है. सर इसमें मतलब कैसे लगाई गया? सेम टेंशन वैसे मतलब. टेंशन इंटू एक्स को इक्वेट करने का कांस्टेंट से. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ चाहिए तो नेक्स्ट लेक्चर. ओके, यस हमारा सर. लेक्चर ना तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, याद दिलाओ मुझे. ओके, यस सर. या मीनवाइल यू कैन ट्राई. ओके, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगा. ठीक है, ओके सर. शैल आई स्टॉप नाउ? ओके, बाय. 2:30 को मिलेंगे. Yes.